Namaskar and good evening. We welcome you back to Artist Showcase. We are equally excited to bring in a very talented artist for everyone today. For all the lovers of percussion, we have this very talented young prodigy of none other than Pandit Chatur Lalji. Please join me. Oh, 1 second. So before I bring him on stage, I definitely need to tell you a little bit about him. Pranshu Chaturlal. He is the grandson of the legendary tabla wizard late Pandit Chaturlal and son of Pandit Charanjit Chaturlal. He is recognized not only for his ability to bridge and blend classical, folk, and popular traditions. His concerts include fusion ensembles with Polish band Masala, Mexican flautist Mr. Horacio Franco, American saxophonist Mr. George Brooks, American guitarist Evelyn Makari, while accompanying legends flute maestro Pandit Hariprasad Chaurasia ji, Sarod legend Ustad Amjad Ali Khan Sahib, legend of saxophone Pandit Kadri Gopal Nath ji, vocal legends Pandit Rajan and Sajan Mishra, Bhajan Samrat Shri Anup Jalota ji, to name a few. Recipient of some very prestigious awards. Actually, there are many. We have just managed to mention only one over here, the Tabla Ratna Award, and many more. Pranshu's percussion ensemble is Tal Vadya Kachehri with Kathak legend Pandit Birju Maharaj ji, and that was exceptionally outstanding. Ladies and gentlemen, please join me on welcoming on stage Pranshu. Namaskar. Thank you so much for having us here. It's completely a pleasure and honor to be part of the show. Thank you So, so good much. evening and welcome to Artist Showcase. Good evening. I'm so sorry we're doing this after a while, so I'm losing my contact with the buttons. Good evening. But How are you? Namaskar. Thank you so so much for having us. we're delighted to have you here with us. And Completely an honor. Pranshu ji, before we proceed and before we do any conversations, I would want you to introduce your amazing artists first. Definitely, I would like them to speak about themselves. We'll start with the youngest member. Hello everyone, my name is Shaunak Banerjee. Come closer to the mic. Yeah. I'm Shaunak Banerjee and I play an instrument called ghatam. It's basically an earthen pot and it's tuned to a certain scale, and yes, that's about it. I have learned from Kumbakonam Shri and Padmanabhan, and I'm currently learning under Giridhar Udupa, and other than that I'm pursuing a master's in artificial intelligence. That's about it. Oh, wow. Thank you. Artificial intelligence. That's interesting. It is. That's lovely. Thank you for That's it being with from my us. side. That's my elder sister. Namaskar, this is Shruti Chaturlal, and I'm blessed to be the granddaughter of the tabla wizard Pandit Chaturlalji. Um, Carrying his legacy forward, I organize concerts in memory of him under the banner of Pandit Chaturlal Festival, and I am UNESCO CIT member as well, TEDx speaker and a columnist where I write about yoga, music, and dance. So that's a bit about me. I give it hand over to Manohar. Namaskar. My name is Manohar Balachandran. I play the mridangam, which is the principal South Indian percussion instrument. Uh, I had the privilege of going through my initial training from Kumbakonam Shri Padmanabhan sir, and I'm further taking lessons from a rhythm wizard Shri BC Manjunath sir. And I have completed my MBA from XLRA Jamshedpur and have actively taken the decision of doing music full time. So yeah, that's it. That's Namaskar. fantastic. And I do want to share with the audience that we had Manohar with us with Hafiz in our first show on Artist Showcase. And we're delighted to have him back. Thank you. Ji. Vishal bhai. नमस्कार, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैंने तबला पंडित विनोद पाठक जी और पंडित आनंदो चटर्जी उनसे थोड़ा तालीम लिया है और क्या बात। बेसिकली मैं परकशन प्लेयर हूँ और मैंने कॉन्गा सीखा है नितिन शंकर जी से जो कि वेरी फेमस रिदम अरेंजर हैं और बस और अब आ गई बारी प्रांशु जी की.
प्रांशु के जी बारे में तो खैर मैंने बहुत कुछ आपने बोला तो है। इतना सब बोल ही दिया है एंड थैंक यू सो मच। आई एम रियली हैप्पी कि आपके साथ हम लोग को मौका मिला जुड़ने का एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। So, before we speak about anything else, because I know we've got so much to talk about, but let's move on to. डेफिनेटली। I'm going to get off the stage because I would love to hear what you have put together for us. Yeah? ऑलराइट। Okay. या श्योर।
Thank you so much. And Really means a lot. Thank you. so this applause is not just from me. I'm sure our entire audience is clapping. I, I'm sure of that. Many thanks to them also This for being present. Yeah. no, but this is it's very beautiful. जो आपने भी बजाया है बहुत ही खूबसूरत बजाया. और आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? जी, आई वुड लाइक माई सिस्टर टू टॉक अबाउट द बाज बिकॉज हम लोग साथ में हम लोगों ने कुछ इस बारे में सोचा था, तो आई वुड लाइक हर टू शेयर द थॉट्स. जी जी. So because Pandit Chaturlal ji की legacy से आते हैं, so when we were actually going, we have a museum where we are sitting right now. It's museum of my grandfather, our grandfather. So when we were going through the documentations, we got to know that Talwadi Kacheri was actually initiated a concept by Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar ji. And with him, because my grandfather and Guruji both were closely involved since beginning, from the era of 1950s. So since he originated It was the executed. concept, it was executed and curated by my grandfather and with one रामनाथ ईश्वरन जी. तो उसी से हम लोग थोड़े से इंस्पायर हुए, क्योंकि दादाजी की हुई चीज़ है, गुरुजी की हुई चीज़ है. एंड लास्ट ईयर बीइंग द birth anniversary of my grandfather on 16th April, we decided that we should come up with a same concept with the young maestros of today. So that's how we came, and because we have different instruments from different genres, so we thought कि इसको सबसे बेहतरीन तरीका इसको नाम देने का होगा बाज, the sounds बिल्कुल of सही. India. बिल्कुल सही. So that was the Main ideology. origination, yeah, of Baaj Sounds of India. No, and Baj And encompasses. I would like to take this opportunity कि सब अगर अपना अपना थोड़ा सा उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है बाज के साथ, वो अगर शेयर करे तो it will be a cherry on the cake. Yeah. जरूर 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 बताएं, जरूर So बताएं. we'll start with पर Shaunak. बिल्कुल जरूर बताइए. So Come a little close, and there's the camera. You look there. yeah. So basically, the sound of Ghatam is not such ki if a lot of things are playing, so sound of Ghatam is like a bit diminished. But I'm glad I got the opportunity to play with these great artists and to highlight the Ghatam in that is quite mesmerizing to me. So yes, I love the opportunity and thanks to Pranshu. अरे भाई. No, and your Ghatam piece was very beautiful because आपने बहुत अच्छी तरह से उसको पकड़ा और I think you highlighted it very well. Thank you so much. Thank you. Over to So I think the distinctive quality about Baaj is that it brings together a lot of ideas, new ideas from. It's not only a meeting of the south and the north, but it's also a meeting of the classical and the folk. The folk being represented by Vishal Bhai, and I think it's just a blessing that so many years ago Chaturlal ji and Ramnath Ishwaran ji had the vision to bring about something like this, which has paved the path for such a beautiful concept, and we are just lucky to be carrying forth this. yeah, it's an honor, absolute honor. स्पेशल थैंक्स टू प्रांशु भाई एंड श्रुति सिस्टर. और पहले मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट देखा नहीं था कभी भी, तो प्रांशु भाई ने मुझे बोला तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा. और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इतने बड़े लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो मैं अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ. बस यही बोल सकता हूँ. थैंक यू. और आपकी ढोलक के साथ जो फोकीनेस आपने डाली पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ही खूबसूरत थी. थैंक यू सो मच. सो अभी प्रांशु आप अपना एक्सपीरियंस बताइए. जी Because बिल्कुल. प्लीज याद रखिएगा कि श्रुति आपके बिल्कुल बगल में बैठी हैं. तो आई वुड लाइक टू शेयर दिस कि एक बार हम लोग ही साथ बैठ के वी वर वॉचिंग अ वीडियो एंड हम लोग एक रिकॉर्डिंग सुन रहे थे दादाजी की और ये तालवाद्य कचहरी की, एंड हम लोग इतना मेस्मराइज हो गए थे सुन के. अलग ही मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात भी करूँगा साथ साथ. हम लोग ने जो बजाया और जो आजकल तालवाद्य कचहरी होता है वो ज़्यादातर 8 में होता है और उसके अंदर 9 मात्रा के अंदर, एंड दे वर प्लेइंग 9 बीट्स एंड 7 बीट्स 13 बीट्स एंड दे वर इम्प्रोवाइजिंग लाइक
इट वाज समथिंग अमेजिंग. सो आई थॉट कि आज की जनरेशन में हम लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ सोचा, एंड वी गॉट रियली इंस्पायर्ड. तब मेरी बात हुई सबसे पहले मनोहर भाई से, और हमने सोचा कि इसको करते हैं. पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ डांस फॉर्म्स भी इसमें करेंगे इन्वॉल्व, विच वी माइट डू इट लेटर. तो एक वो भी बात है. बट फिर विशाल भाई के साथ भी बात हो ही रही थी, तो वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि कैसे क्या किया जाए, एंड देन शौना केम इनटू द पिक्चर. तो हम लोगों ने फिर डिसाइड करके मैंने बात करी श्रुति दीदी से, फाइनली द बॉस, एंड देन वी केम अप विद दिस. एंड हम लोगों ने बाज, बिल्कुल सही बोला कि हम लोगों ने बाज जो रखा था नाम, वो यही सोच के रखा गया था कि ये अलग अलग तरीके के बाज हैं और अलग साउंड प्रोडक्शन है, एकदम ही अलग कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है और बहुत ही अच्छा है. और हम लोग इसको किस तरह से आज की जनरेशन के लिए कर सके, तो हम लोग थोड़ा इसको सोच के कोशिश करी है. और बाकी आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, तो हम लोग ज़रूर आगे जाएंगे इसको लेकर. नो, सो श्रुति, कंग्रेचुलेशंस, आपका कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है एंड इसमें इतना पोटेंशियल है, बिकॉज हमारी कंट्री कल्चरली इतनी रिच है. एंड आज हमने केवल 4 परकशन साज हमने प्रेजेंट किए हैं, और हमारी कंट्री में इतने सारे और हैं. आई मीन, अगर नाम लेने लग जाएंगे तो हमारा सारा अभी 1 घंटा हमारा इसमें निकल जाएगा. लेकिन आई थिंक इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल बहुत है. और आपके लिए डांस, जब आप बात कर रहे थे, ऑलरेडी मेरे दिमाग में क्यूरेशन चल रहा था, बिकॉज देयर इज another very young talented group of dancers, and it's a Kathak group. They are from Jodhpur. में हम आपको उनके साथ कनेक्ट करेंगे. अनहत अकेडमी Would love करके to हैं collab. Yeah. institute, and they also specialize in this. They're a young set of 5 ladies, and it's led by Ankita. आपको connect करवाएंगे उनके साथ. And I feel because they also explore exactly this concept. They also bring in classical, जो exactly जो आप कर रहे हैं, classical और folk को आपने जो जिस तरीके से आपने फ्यूज किया है, इसको फ्यूजन बोलते हैं. So बहुत बहुत ही अच्छा था. So I think we should now stop talking, and I think our audience, I can see the dwindling numbers because people don't like to hear conversation. They Oh, want wow, to that's hear the lovely. performance. So All right. should we? I think I'm just going to take myself off and leave the stage to you for the next piece Sure. that you have prepared for us. Yeah. Yeah.
Again, another very, very nice performance. Very, very nice piece. So kind. So, Thank you so much. taking our conversation quickly forward is Yeah. so Shruti and Pranshu, this is a question directly to you. You know, taking forward such a rich legacy, it's a big inheritance, and it's a huge responsibility. So tell us in very short this thing, what is your plan? Like you plan to collaborate with more artists, with younger artists, you plan to take Baaj across the globe. What is the plan? You speak. सो जैसे कि प्रांशु ने कहा कि हम लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्शंस लेकर आ रहे हैं जो हम nuances of Indian classical music intact rahe, but at the same time we are able to reach out the younger generation. That is our motto. And because we are blessed to have the banner of Pandit Chaturlal Festival on us, so we have taken a lot of productions in this 2 years of lockdown, Mm-hmm. and amazing artists from all across India and abroad have collaborated together to bring some amazing productions. तो बिकॉज अब इतनी मेहनत करी है और इतने अच्छे आर्टिस्ट साथ आए हैं, तो हमारा आगे यही प्लान है कि हम इसको और ज़्यादा अच्छे से संजो कर लेकर जाएं, और हिंदुस्तानी ऑडियंस के साथ तो ऑफ कोर्स, बट इवन बाहर विदेश में भी इसका प्रचलित करें, और अपने इतने जो सुंदर धरोहर है, जो इतना सुंदर हमारे शास्त्रीय संगीत, हमारा कल्चर है, उसको आगे लेकर। बिल्कुल उसका प्रचार करें, उसको हम और आगे लेकर जाएं। और जैसा कि कहा कि बहुत डिफरेंट तरह के आर्ट फॉर्म्स के साथ हम लोग को भी करने का बहुत इच्छा है, क्योंकि एक फाइनली तो वही 7 सुर है और वही 4 मात्रा, 5 मात्रा, 6 मात्रा सभी का एक है। तो मेरी बहुत इच्छा है कि हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करें अलग अलग फॉर्म्स के साथ, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आगे लेकर जाएं। नहीं नहीं, बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके। और ये बातें सुन के हमें लिटरली यही फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है, एक सिक्योरिटी आती है कि ये धरोहर ज़रूर आगे ज़रूर बहुत अच्छी तरह आप आगे ले पाएंगे। और वो दिख रहा है हमें आपके एफर्ट से, आपके हार्ड वर्क से, और जिस तरीके से आप इसको आगे लेके यहाँ तक लाई हैं, और आप दोनों लाए हैं इनफैक्ट। और इसको आप आगे भी लेके जाएंगे, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ हमेशा है। So of course, we wish you all the best in this. But before we end today's show, um, my favorite is the Padhant. So I'm just being a little greedy. I know it's past 7:30, but I'm being a little greedy and asking you to do a small Padhant for us. Not at all, Of not at course. all. Yeah, we would love to do it. Yeah. Up. 2 Dha. Taka takit dha. Taka takit taka takit dha. Taka takit taka takit taka takit dha. Taka takit taka takit taka takit taka takit dha. Taka takit taka takit taka takit taka takit taka takit taka takit dha dha dha. Taka takit dha dha dha. Taka takit dha dha dha. Taka takit dha dha. Taka takit dha dha. Taka takit dha dha. Taka takit dha. Taka takit dha. Taka takit dha. Taka takit taka takit taka takit. Taka takit taka takit taka takit. Taka takit taka takit taka takit dha ge dha. Beautiful this Thank you so was. much. Thank you. Thank you so much. It was an absolute pleasure and an absolute honor for us to have you here with us. Thank you, Pranshu. ये आप ही का effort था, और मतलब we stayed in touch, and we are really delighted to have had you with us नहीं on नहीं, Artist आपका बहुत Showcase बहुत today. शुक्रिया, और आप लोगों ने हम सबको याद किया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। Thank you. Thank you again. And of course, Pranshu ji ki details are running on the screen below. So if anybody would like to get in touch, please get in touch with them directly. Otherwise, you can get in touch with them through us. For the younger artists, the message is please collaborate with them, because there's a lot of potential in this program. Baaj is a beautiful curation. That's what I would like to say. इसमें इतना power है, इतना feeling है, इतना soul है। ये इस क्यूरेशन को रुकना नहीं चाहिए कभी भी। और इनफैक्ट इस क्यूरेशन को आप along with Indian classical sounds, आप international percussions को भी डाल सकते हैं, and just to make it more sustainable, make it more contemporary। लेकिन
इंडियन क्लासिकल को नहीं डाइल्यूट करना है, हमारे इंडियन फोक साउंड्स को मत डेफिनेटली। डाइल्यूट करना कभी भी। बिल्कुल। बट सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स आपके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जो हम लोग सब बाद में जाके वी कैन, आई डोंट इवन वांट टू गो देयर जस्ट नाउ बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ देम, सो प्लीज एंजॉय रिस्पॉन्डिंग टू ऑल ऑफ देम। सो या thank you once again, Thank you. थैंक Thank यू Shaunak, you सो again, Shruti, मच। Pranshu. Pranshu, Manohar, and Vishal Bhai. Thank you so much. It was a pleasure for us to have you here with us today. Big thank you to the audience for being with us, and do hope you enjoyed the show today, which we came back after a long time. And so, until our next show, whenever that is, please take care of yourselves. Pandemic is the COVID is in and out, but whatever, it's become a या part of our lives. But still take care of yourselves. या थैंक So, यू सो मच। thank you very much. Thank you. And thank you to Naina and Rajshri who handled the entire back end as always. So, thank you and good night. Thank गुड you. नाइट। Namaskar. नमस्कार।